देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत अध्याय 14 पंचम स्कंध चल रहा है। सा होवाच स एष देहात्ममानिनां सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशलाकुशल संवहार विनिर्मित विविध देहा बलिभिर्वियोग संयोगाद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववद् सुगमे अध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादित कर्मानुभवः शमशानवद् स्योत्तमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगैः स्तत्ताप उपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीं वरुन्धे यस्यां हा वा एते षड् इन्द्रियानामानाः कर्मणा दस्यव एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मोपैकं बहुकृच्छाधिगतं साक्षात् परं पुरुषाराधन लक्षणो यो असौ धर्मस्तं तु सांपराय उदाहरन्ति। तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवणास्वादन अवघ्राण संकल्प्य व्यवसाय गृहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पति। अथ च यत्र कौटुम्बिका दारपत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृक्षगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उर्णकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति। यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणविरुद्भिर्हरवरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्युत्सीदन्ते यदयं कामकरण्य एष आवसथः तत्र गतो दंशं शकसमापसदैर्मनुजैः सलभशकुन्ततस्कर मूषकादिभिरुपरुध्यमानवैः प्राणः क्वचित् परिवर्तनमासन्नोऽस्मिन् ध्वन्या विद्या कामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरम् उपपन्नम् इति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति। तत्र च क्वचिद् आतपोदकनिभानविषयानुधावति पानभोजन व्यवायादिव्यसनलोलुपः फिर क्वचिच्चासेददोषनिषदनं पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः स्ववर्णमुपादितसत्यग्निकामकातर एवोन्मुखपिशाचम्। अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्य अनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसारटव्यामितस्ततः परिधावति। क्वचिच्चा वाद्योपम्यया प्रमदयारोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवा साधुमर्यादो रजस्वालक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति। क्वचित् सकृत् अवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन बिभ्रंशित स्मृतिस्तस्यैव मरीचितोऽय प्रायास्तानेवाभिधावति। क्वचिद् उलूकझिल्लीष्वन् वदति परुषरभसा टोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भत्सिते नाधिव्यथित कर्णमूलहृदयः।
सा यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्कर्काकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानपदो भयार्थशून्यद्रविणान् जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति। एकदा सत्प्रसंगान् निकृतम् अतिविरुद्धश्रोतः स्खलन् वधूभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डम् अभियाति। यदा तु परबान्धयान्ध आत्मनेनोपन्मति तदा हि पितृपुत्रबर्हिष्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति। क्वचिदासाध्यग्रहं दावव अत्प्रियार्थविधुरं सुखोर्दकं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति। क्वचित् कालविस्मितराजकुलरक्षसापहरत् प्रियतं धनासुः प्रमर्तकयो विगतजीवलक्षण आस्ते। कदाचिन्मनोरथोपगत पितृपितामहाध्यस तत्सदिति स्वप्ननिर्वृत्तिर्लक्षणम् अनुभवति। क्वचिद् गृहाश्रमकर्म चोदनातिभरगिरिमारुरोक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निवसीदति। क्वचिच्च दुस्सहेन कायाभ्यन्तर्वहनिना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्ययति। स एव पुनर्निद्राजगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्योऽसेते नान्यत् किञ्चन वेदसौ इवापविद्धः। कदाचित् भग्नमानदृष्टो दुर्जनदन्दशूकैर्लब्धनिद्रा क्षणो व्यथित हृदयेनानुच्चीयमाण विज्ञानोन्धकूपेन्धव उत्पतति। कर्हि स्म चित्कामं धूलवान् विचिन्य वन्यदा परद्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये। अथ च तस्माद् उभय अथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति। मुक्तस्थो यदि बन्धाद्देव तत् उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः। क्वचिच्चाशीतवाताद्यनेकाधिदैविक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते। क्वचिन्मथो व्यवहरन्त्य किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिणी कामात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चिद् वा विद्वेषमेति वित्तसाठयात्। अधवन्युमस्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुख दुःख रागद्वेष भय अभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्यैश्वर्य अवमान क्षुत्पिपासा व्याधि जन्म जरा मरणादयः। क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढ़ः प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद विहार ग्रहारंभाकुल हृदयस्तदाश्रवायस्त। सुत दुहित्र कलत्र भासितावलोक विचेष्टिताप हृत हृदय आत्मानम् अजितात्म अपराधे अंधे। आत्मानम् अजितात्म अपारे अंधे तमसि प्रहीणोति। हरे कृष्ण। कदाचिद् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमाण्वादि द्विपरार्धापवर्ग
कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्मतृणस्तम्भादीनां भूतानां निमिषितो मिश्रितां मित्रस्थहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अनादृत्य पाखण्डदेवताः कंकग्रधवकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते। यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावशंस्तेषां शीलम् उपनयनादिश्रौत स्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्य आराधनमेव तद् रोचयन् शूद्रकुलं भजते। निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथिनीभावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निर्वरोधः स्वैरेण विहरन्नति कृपणबुद्धिरन्योन्य मुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः। क्वचिद्द्रुमवदैहिकार्थेषु ग्रहेषु रंसन्यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः। एवं ध्वन्यवरुन्धानु मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचिच्छीतवाताद्यनेकवैदिकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् किञ्चिदन्नम् उपयाति वित्तसाठ्येन क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनाद्युपभोगविहीनो यावद् प्रतिलब्धमनोरथ उपगतादाने वशित मतिस्ततस्ततो मानादीनि जनाधिभिलभते। एवं वित्तवितिसङ्ग विवृद्धवैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहते यथापवहति। एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तुं हा भावेतरस्तत्र विसृज्य जातमुपादाय शोचन् मुह्यन् बिभ्यद् विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन् अह्यमानः साधुवर्जितो नैनावर्तते अद्यापि यत् आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारम् उपदिशन्ति। यदिदं योगानुशासनं न वा एतद्वरुन्धते यन्यस्य दण्डा मुनय उपशमशीला उपरतात्मनः संवगच्छन्ति परमात्मा तक् यद्यपि दिग्भजैनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किं तु परं रधे सैरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयम् उपसंहृता कर्मबल्यमवलम्ब्य तत् आपदः कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनिवर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि तस्येदम् उपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः नानुवर्तमार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः। यो दुस्त्यजान्दार सुतान् सुहृदराज्यं हृदि स्पर्शः जहौ युवैव मलवद् उत्तम श्लोकलालसः। यो दुस्त्यजाञ्छिते सुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकां नैच्छन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट सेवानुरक्तमनसां भगोऽपि फल्गुः। यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्मृगत्व
त्वमपि यः समुदाजहार य इदं भागवत सभाजिता वदात गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्यैनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं मानुषोऽध्याख्यास्य अत्यभिनिन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे भरतोपाख्याने परोक्षविवरणं नाम चतुर्दशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्य आत्मजः सुमतिर्नाम अभिहितो यमुहावाव केचित् पाखण्ड्यन् ऋषभ पदवीम् अनुवर्तमानं चानार्या अवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। तस्माद् वृद्धसेनायां देवताजिन्नां पुत्रोऽभवत्। अथासुर्यां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य सुवर्चलायां प्रतिः उपजातः या आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषमनुस्मार। प्रतिहात सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादय स्त्रय आसन्निज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहर्तुः स्तुत्याम् अजभूमानाव जनिषाताम्। भूम्नऋषिकुल्यायाम् उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावनित्युत्सायां हृदयज आसीद् विभुर्विभोरत्यां च प्रथुषेणस्तस्मान्नक्त आकूत्यां यज्ञे नक्ताद् द्रुतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत। साक्षात् भगवतो विष्णुर्जगदरिक्षऋषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालनपोषण प्रीणनोपलालनानुशासन लक्षणेन एज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणे सर्वात्मनार्पित परमार्थलक्षणेन ब्रह्मविचरणानुसेवया पादित भगवद्भक्तियोगेन चाभीक्षणसः परिभाविताति शुद्धमतिरुपरतानात्मे आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोऽपि निरभिमान एवाव निमज्जुगुपत। तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति। गयं नृपः का प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाभिमानी बहुविधधर्मगोप्ता समागत श्रीः सदसम्पत्तिः सतां सत्त्वसेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते यमभ्यसिञ्चन् पर्यामुदाः सतिः सत्याशिषो दक्षकन्यासरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवतसस्नुतोधाः छन्दांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुदुहुराजनुरथो बलिं नृपाः प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा यदा शिशां षष्ठमंसं परेत्य यस्याध्वरे भगवान् ध्वरात्मा मघोनि माद्यत्युरुसोमपीठे श्रद्धा विशुद्धाचलभक्तियोग समर्पिते ज्याफलमाजहार यत् प्रीणनाद बर्हिषि देवतिर्यं अनुष्य वीरोत्तरणमाविरिञ्चात् प्रीयेत सद्यः सः विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिर्वरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुश्चित्ररथादूर्णायां
सम्राट जनिष्ठ तत् उत्कलायां मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुत्पद्यत तस्मात् सर्गायां मधुरनामाभवन्मधोः सुमनसि वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्थो प्रमन्थो जज्ञाते मन्थो सत्यायां भवनस्ततो दूषणायां त्वष्टा जनिष्ठ त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विसूच्यां किल जातम्। तत्रायं श्लोकः प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनं नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। इस 16वां श्लोक इसमें दिया नहीं गया है शायद। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।